नमस्कार। आज हम भारत की कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ प्रणाली की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये वो व्यवस्था है जो हम सब जानते हैं, करोड़ों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय एक बहुत जरूरी वित्तीय कवच का काम करती है। बिल्कुल, और इसका मूल विचार यही है कि कर्मचारियों में एक लंबी अवधि की बचत की आदत पड़े ताकि बुढ़ापे में एक आर्थिक सहारा रहे। हाँ, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो कानूनी दस्तावेजों, सरकारी पोर्टलों से मिली जानकारी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और न्यायिक विश्लेषणों पर आधारित है। सही कहा। तो आज हम ईपीएफ से जुड़े जरूरी नियम, योगदान कैसे होता है, पैसे निकालने के क्या प्रावधान हैं और हाँ, अनुपालन यानी कंप्लायंस, इन शर्तों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये जानकारी कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं ईपीएफ के बिल्कुल आधार से। इसका इतिहास क्या है? देखिए, इसकी नींव रखी गई कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के जरिए। वैसे इसकी शुरुआत थोड़ी पहले 1951 में एक अध्यादेश से हुई थी, जिसे बाद में इस कानून ने कह सकते हैं स्थायी रूप दिया, और अब तो ये पूरे भारत में लागू है। अच्छा, तो ये कानून किन पर लागू होता है? क्या ये हर तरह के बिजनेस के लिए जरूरी है? मुख्य रूप से तो ये उन उद्योगों पर लागू होता है जो अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए हैं, जैसे सीमेंट, इंजीनियरिंग, लोहा इस्पात, कागज, कपड़ा वगैरह। लेकिन हाँ, समय के साथ दायरा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने कई और क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है, जैसे सिनेमा थिएटर, आईटी कंपनियां, यहाँ तक कि प्राइवेट एयरपोर्ट भी। और कर्मचारियों की संख्या का भी इसमें कुछ रोल है, कितने लोग होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर जिस भी संस्थान में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वो इसके दायरे में आ जाता है। हालांकि कुछ संस्थानों को छूट भी मिल सकती है। अच्छा, कैसी छूट? जैसे कि सरकारी नियंत्रण वाले संस्थान या फिर ऐसे संस्थान जिनके पास पहले से ईपीएफ जैसी या उससे बेहतर कोई योजना चल रही हो। समझ गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, योगदान कंट्रीब्यूशन। ये कैसे काम करता है? कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का क्या रोल है इसमें? कर्मचारी के लिए तो ये सीधा है। उनकी जो मूल वेतन है, महंगाई भत्ता यानी डीए, और अगर कोई रिटेनिंग अलाउंस है तो उसका 12% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। 12%, ठीक है। और नियोक्ता, उनका योगदान कैसे तय होता है? नियोक्ता भी कर्मचारी के वेतन का 12% ही योगदान देता है, लेकिन यहाँ एक कह लीजिए पेंच है। ये पूरा 12% ईपीएफ में नहीं जाता। ओह, तो फिर इसका एक हिस्सा 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में चला जाता है। पर इसमें एक सीमा है। ईपीएस में जाने वाली रकम की गणना अधिकतम 15,000 के वेतन पर होती है। हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1,250 रुपए ही ईपीएस में जा सकते हैं। अच्छा, तो बाकी का पैसा जो 12% में से बचा, वो कहाँ जाता है? वो बचा हुआ हिस्सा यानी कम से कम 3.67% वो कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है। और हाँ, ये 15,000 रुपए की सीमा याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी पर कैलकुलेशन होता है। पर अगर कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से ज्यादा भी कटवा सकता है, उसे वीपीएफ कहते हैं। ये तो हुई योगदान की बात, लेकिन इसका सही से पालन हो, ये देखना भी तो जरूरी है। अनुपालन यानी कंप्लायंस के क्या नियम है? कंपनियां कैसे सुनिश्चित करती हैं? ये नियोक्ताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उन्हें हर महीने की 25 तारीख तक पिछले महीने का पीएफ रिटर्न फाइल करना होता है। अच्छी बात यह कि अब ये सब ऑनलाइन यूनिफाइड पोर्टल के जरिए हो जाता है। प्रक्रिया थोड़ी आसान हुई है। और अगर कोई कंपनी समय पर ये नहीं करती, देर से जमा करती है या रिटर्न फाइल नहीं करती, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस पर काफी नजर रखता है। वो बकाया वसूली के लिए खास अभियान भी चलाते हैं। एक दिलचस्प बात बताऊं, मार्च 2024 तक का डेटा ये कहता है कि कुल बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा, करीब 58%, अदालती मामलों में फंसा होने की वजह से तुरंत वसूली योग्य नहीं यानी एनआईआर श्रेणी में था। अरे बाप रे, 58%! इसमें कानूनी पेचीदगियां भी काफी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देर से भुगतान करने पे जुर्माने का क्या प्रावधान है? कुछ पेनल्टी वगैरह लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। पहली बात तो ये कि जितनी देर होगी उस पूरी अवधि के लिए बकाया रकम पर 12% सालाना की दर से ब्याज देना होगा, सीधा सीधा। 12% ब्याज? और ब्याज के अलावा भी कुछ? हाँ, ब्याज के ऊपर हर्जाना यानी डैमेजेस भी लगता है, और ये देरी की अवधि के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे 2 महीने तक की देरी पर 5% सालाना, 2 से 4% पर 10%, 4 से 6 महीने पर 15%
और अगर देरी 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो सीधा 25% सालाना। 25%? हाँ, और ये हर्जाना बकाया रकम के 100% तक भी पहुंच सकता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी गंभीर मामला है। ये तो वाकई कड़े नियम है। चलिए अब थोड़ा कर्मचारियों के फायदे की बात करते हैं। ईपीएफ पर ब्याज कैसे मिलता है और निकासी के क्या नियम है? देखिए, ब्याज की गणना तो हर महीने होती है, लेकिन खाते में जमा साल के आखिर में ही होता है। जैसे 2021-22 के लिए दर 8.10% सालाना थी। हाल ही में नवंबर 2024 में दावा निपटान के समय ब्याज भुगतान के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिससे सदस्यों को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल सके। और अगर किसी को रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने हो, क्या ये मुमकिन है? वैसे तो ये रिटायरमेंट सेविंग है, तो पूरी रकम 55 साल की उम्र के बाद ही मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ खास जरूरतें पड़ने पर पहले भी पैसा निकाला जा सकता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या शादी, कोई गंभीर बीमारी का इलाज, घर खरीदना या बनाना, होम लोन चुकाना। और बेरोजगारी की स्थिति में? हाँ, अगर कोई 1 महीने से ज्यादा बेरोजगार है तब भी कुछ हिस्सा निकाल सकता है। एक और सुविधा है, 54 साल की उम्र पूरी होने पर या रिटायरमेंट से ठीक 1 साल पहले अपने ईपीएफ खाते की 90% तक रकम निकालने की इजाजत मिल जाती है। अच्छा, आखिर में थोड़ा कानूनी पहलू पर भी बात करते हैं। आपने पहले भी जिक्र किया कि इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं। बिल्कुल, ईपीएफ कानून काफी विस्तृत हैं और कभी-कभी जटिल भी। अक्सर ये सवाल उठते हैं कि कानून किस पर लागू होगा, हर्जाना कितना लगेगा, वसूली कैसे होगी। इसीलिए अदालतों में मामले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसलों के जरिए इन नियमों की व्याख्या की है और स्टैंडर्ड तय किए हैं। वो जो 50 लैंडमार्क जजमेंट्स का संग्रह है, वो इसी जटिलता का एक प्रमाण है। और कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो खुद अपना पीएफ ट्रस्ट चलाते हैं। आपने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का जिक्र किया था। हाँ, उन्हें छूट प्राप्त प्रतिष्ठान या एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स कहते हैं। ईपीएफओ उन्हें कुछ शर्तों के साथ अपना पीएफ ट्रस्ट चलाने की इजाजत देता है, लेकिन उन्हें ईपीएफओ के नियमों का मतलब बहुत सख्ती से पालन करना होता है। जैसे निवेश कहाँ करना है, ऑडिट कैसे कराना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है वगैरह। अगर वो इन शर्तों को तोड़ते हैं तो उनकी छूट रद्द हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और लंबी अवधि की बचत योजना है। ये रिटायरमेंट के लिए एक आधार तैयार करती है, लेकिन इसके नियमों और प्रक्रियाओं की सही जानकारी होना नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए ही मतलब बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिस तरह टेक्नोलॉजी जैसे ये ऑनलाइन पोर्टल हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, ईपीएफ के कामकाज को बदल रही है, क्या ये भविष्य में कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाएगी और कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाएगी, या फिर कि बढ़ती जटिलताएं इसे और चुनौतीपूर्ण बना देंगी? ये एक सोचने वाली बात है, आगे देखने वाली बात है। आज हम भारत के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ निजाम पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, ये 1952 के एक कानून के जरिए बना था ताकि मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के लिए बचत में मदद मिल सके। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेजात हैं, ईपीएफओ रिपोर्ट्स और कुछ अहम अदालती फैसले भी हैं। जी हाँ, और इस गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि ये निजाम मतलब अमली तौर पर कैसे काम करता है। सही। हम देखेंगे कि ये कानून किन पर लागू होता है, इसमें शिराकतें कैसे होती हैं, पैसे कब निकाले जा सकते हैं और तामील यानी कंप्लायंस के क्या तकाजे हैं, और क्या कोई नई तब्दीलियां आई हैं, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ये कानून लागू कहाँ होता है। 1952 में जब ये शुरू हुआ तो किन इदारों के लिए था? देखें, शुरू में ये कुछ बुनियादी सनतों तक महदूद था, जैसे सीमेंट, सिगरेट, इंजीनियरिंग, लोहा, स्टील, कागज और टेक्सटाइल। अच्छा, ये फहरिस्त कानून के शेड्यूल आई में दी गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ पुरानी सनतों तक नहीं रहा, वक्त के साथ सुना है दायरा काफी बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल। जरा बताते हैं कि अब इसमें आईटी कंपनियां, निजी हवाई अड्डे, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां भी शामिल हैं। ये तो काफी बड़ी तब्दीली है। हाँ, काफी तोसी हुई है। और क्या अदालतों ने भी इसकी वजाहत में कोई किरदार अदा किया है कि कौन इस दायरे में आएगा? हाँ बिल्कुल।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने कई बार ये वाजे करने में मदद की है। अच्छा, जी, मिसाल के तौर पर? एक केस था RPFC बामुकाबला सनातन धर्म गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। इसमें अदालत ने ये असूल तय करने में मदद दी कि क्या कोई इदारा सरकारी कंट्रोल में समझा जाएगा या नहीं और उस पर एक्ट लागू होगा या नहीं। अच्छा, समझ गई। तो दायरा कार वक्त के साथ वाजे होता गया। अब आते हैं शराकत पर। पैसा आता कैसे है इसमें? मुलाजिम और आजर यानी एम्प्लॉयर कितना हिस्सा डालते हैं? देखें, मुलाजिम अपनी बुनियादी तनख्वाह और महंगाई अलाउंस यानी बेसिक प्लस DA का 12% हिस्सा डालता है। ठीक है। आजिर भी उतनी ही रकम डालता है, 12%। लेकिन आजिर की रकम जो है वो तकसीम हो जाती है। अच्छा, कैसे? इस 12% में से 8.33% एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी EPS में जाता है। और बाकी जो 3.67% बचा वो EPF में जमा होता है। अच्छा, तो ये एक अहम नुक्ता है। इसे एक मिसाल से समझाएं तो अगर किसी की बेसिक और DA मिलाकर मान लें 15,000 रुपए हैं। हाँ, तो इस सूरत में मुलाजिम 1,800 रुपए देगा जो 15,000 का 12% है। ठीक है। आजर भी 1,800 रुपए डालेगा, लेकिन उसमें से 1,250 रुपए यानी 8.33% EPS में जाएंगे। सही। और बाकी 550 रुपए जो 3.67% बनते हैं वो EPF में जाएंगे। समझ गई। और आजरों को ये कब तक फाइल करना होता है? आजरों को ये सारा हिसाब किताब मुकम्मल करके हर महीने की 25 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, ये तो शराकत की बात हुई। अब अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या रिटायरमेंट से पहले निकलवाए जा सकते हैं? देखें, आम उसूल तो यही है कि ये रकम रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन हाँ, कुछ खास हालात में जुज़वी रकम निकालने की इजाजत है। जैसे तालीम के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी ब्याह, मकान खरीदना हो या होम लोन की अदायगी करनी हो। अच्छा। यहाँ तक कि अगर कोई 1 महीने से ज्यादा बेरोजगार है या कुदरती आफात की सूरत में भी। ओह। बल्कि रिटायरमेंट से ठीक 1 साल पहले आप 90% तक रकम भी निकाल सकते हैं। ये तो काफी लचक है। अच्छा, अब तामील यानी कंप्लायंस का जिक्र भी जरूरी है। क्या इदारे इन कवानीन पर ठीक से अमल करते हैं? EPFO इसको कैसे यकीनी बनाता है? देखें, EPFO कोशिश तो करता है। वो बाकायदगी से ऑडिट करते हैं और बकायाजात की वसूली के लिए मुहिम भी चलाते हैं। जैसे नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक की एक मुहिम का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या ये वसूली हो पाती है? यहाँ एक तशवीशनाक बात है। ज़राए के मुताबिक मार्च 2024 तक तकरीबन 58% बकायाजात NIR थे। NIR वो क्या होता है? Not immediately recoverable, मतलब ऐसी रकम जो अदालती हुक्म इम्तनाई यानी कोर्ट स्टे ऑर्डर्स की वजह से EPFO फिलहाल वसूल नहीं कर सकता। 58%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये निज़ाम की माली सेहत के लिए और फंड्स की बरवक्त फराहमी दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो अगर कोई तामील नहीं करता तो क्या नताइज होते हैं? जुर्माने वगैरह? जी बिल्कुल। अगर अदायगी में ताखीर हो तो 12% सालाना के हिसाब से सूद लगता है। 12%? जी। और इसके अलावा ताखीर कितनी हुई है इस हिसाब से जुर्माने भी हैं, जो 5% से शुरू होकर 25% सालाना तक जा सकते हैं। अच्छा, खासा जुर्माना है। हाँ, और इस सिलसिले में ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज बमुकाबला यूनियन ऑफ इंडिया जैसा केस अहम है। वो क्यों? क्योंकि इसने ये वाजे किया कि सेक्शन 14B के तहत जो नुकसानात यानी डैमेजेस लगाए जाते हैं वो सिर्फ सजा नहीं है। तो फिर क्या है? वो महकमे को होने वाले हकीकी नुकसान की तलाफी के लिए हैं। इससे जुर्माने आयद करने का तरीकाकार ज्यादा माकूल बना। समझ गई। क्या कुछ इदारों को इस कानून से छूट भी मिल सकती है? मतलब वो अपना अलग सिस्टम चला सके? हाँ, ऐसा मुमकिन है। कुछ इदारे मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। शर्त यह है कि उनकी अपनी प्रोविडेंट फंड स्कीमें EPF एक्ट के तहत मिलने वाले फवायद से कम ना हो। अच्छा। लेकिन उन मुस्तस्ना इदारों को भी सख्त शराइत पूरी करनी होती हैं। क्या शराइत? उन्हें अलग अकाउंट्स रखने होते हैं, रिटर्न वक्त पर फाइल करने होते हैं और EPFO की जो सरमायाकारी की हिदायत हैं उन पर अमल करना होता है। और अगर ना करें तो उनकी छूट मंसूख हो सकती है। ठीक है।
क्या हाल ही में इस निजाम में कोई अहम तब्दीलियां या बेहतरी लाई गई है? जी हाँ, हाल ही में नवंबर 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ने कुछ तरामीम मंजूर की हैं। किस बारे में? उनका मकसद क्लेम्स की अदायगी को तेज करना है और सूद की अदायगी का जो तरीकाकार है उसे बेहतर बनाना है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। जी, पहले सूद का हिसाब थोड़ा पेचीदा था, खास तौर पर महीने के आखिर में सेटल होने वाले क्लेम्स के लिए। अब इसे आसान और मुलाजमीन के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाया गया है। जबरदस्त। और ये जो अदालती फैसलों का आपने जिक्र किया, उनका किरदार कितना अहम रहा है इस पूरे निजाम की तश्कील में? बहुत ज्यादा अहम। देखें, ईपीएफ एक्ट पर 50 तारीखी फैसले जैसी इशाअतें भी हैं। ये जाहिर करती हैं कि अदालतों ने वक्त के साथ साथ इस कानून की पेचीदगियों को समझने और इसकी तशरीह करने में किलीदी किरदार अदा किया है। तो ये फैसले एक तरह से रहनुमाई फराहम करते हैं? बिल्कुल, आजरों और मुलाजमीन दोनों के लिए ये अमली रहनुमाई का काम करते हैं। सही। तो खुलासा ये है कि ईपीएफ भारत में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक बुनियादी स्तूतून है। इसके कवायद व ज़वाबित काफ़ी तफसीली हैं, चाहे वो शराकत का मामला हो, रकम निकालने का या कानूनों पर अमल दरामद यानी कंप्लायंस का। और ये मुसलसल बदल भी रहा है। जी, अदालती तशरीहात और हालिया तब्दीलियां जाहिर करती हैं कि इसे वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ये सब जानकर एक सवाल जहन में आता है आखिर में, क्या मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी और शायद बेहतर कम्युनिकेशन इस निज़ाम को मजीद शफाफ और आसान बना सकते हैं? उम्मीद तो यही है, खास तौर पर आजरों और मुलाजमीन दोनों के लिए, ताकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मकासद भी पूरे हों और कारोबारी अमल भी ज्यादा मुतासिर ना हो। ये तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाएगा, ये शायद देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए। स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ EPF ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ। बिल्कुल। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। हाँ जी, चलो फिर शुरू करते हैं। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ EPF ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? कोई सरकारी लाजमी रिटायरमेंट बचत स्कीम है? हाँ जी, बिल्कुल। ਇਹ ਨਾ 1952 ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੱਪੜਾ, IT, ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EPF ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 12% ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ DA, ਉਹਦਾ 12% ਉਹਦੇ EPF ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ 12% ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ 12% ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ EPF 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 8.33% ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ EPS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, EPS 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3.67% ਬਚਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ EPF 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ EPF 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ? ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਹਾਂ,
ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਮਿਲੇ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ? ਰਿਟਰਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਾ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂ। ਓਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25% ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPFO ਬਕਾਇਆ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ, ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਲੋਨ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ 90% ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PF ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ? ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ EPF ਸਕੀਮ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ EPFO ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। समझ गई। तो कुल मिला के ये EPF एक बहुत जरूरी चीज है भारत में काम करने वालों के लिए, एक सोशल सिक्योरिटी है ना? बिल्कुल, रिटायरमेंट लिए पैसा जुड़दा, पर हाँ सिस्टम थोड़ा गुंजलदार जरूर है। कानून, स्कीमा, फिर अदालतां दे फैसले, ये सब मिलके इनू रूप दिंदे ने। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਗ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਿੰਗ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1952 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। Welcome to the Deep Dive. We know you want to get informed, fast, and that's what we're here for, getting straight to the heart of things. Exactly. And today we're unpacking India's Employees Provident Fund. You probably know it as the EPF. Right, the EPF. And for this deep dive, we've pulled together quite a mix of materials, haven't we? We have. We're looking at, legal analyses, practical guidelines for employers, government publications, and even some really key court judgments. So the mission today is to sort of sift through all that and pull out the essentials, make it clear, maybe even a bit engaging, and definitely relevant for you listening. Precisely. Make sense of the EPF. Okay, so maybe starting right at the beginning, for anyone who needs a quick refresher, what's the core idea behind the EPF? Well, at its heart, the EPF is India's big social security initiative. It's really designed to encourage and, build up retirement savings for employees. Works across loads of different sectors. A saving safety net, essentially. You could put it that way, yeah. It's a system where both the employee and the employer chip in regularly. The aim is fostering that long-term financial security habit. Sounds pretty fundamental to the Indian system. How long has it actually been around? Oh, it's got quite a history, actually. Might surprise you. The idea first popped up in an ordinance back in 1951. 50, wow. Yeah, and that led pretty quickly to the formal act, the Employees Provident Funds Act in 1952. But what's really interesting is how it's changed since then. It hasn't just stayed static. Not at all. It's been amended, believe it or not, 15 times. 15? 15 times, which, really shows how it's had to keep pace with India's economy and workforce changes. And another interesting bit, it didn't initially cover Jammu and Kashmir. Oh, really? Nope, but now it applies across the entire country. 15 amendments. Yeah.
That really does speak volumes about its evolution. Okay, so who actually needs to follow these rules? When does a company, an establishment, have to get involved with EPF? That's a common question. Our sources don't give one single magic number, like if you have X employees, you're in. It's more general than that. So no simple threshold. Not universally stated, no. But the principle is that it covers a really broad range of establishments. Think private limited companies, sole proprietorships, partnerships, across a whole list of industries specified in that 1952 Act, the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. Can you give us a flavor of those industries? What did it start with and what's been added? Sure. Back in 52, it was focused on core industries, things like cement, cigarettes, engineering, electrical and mechanical, iron and steel, paper, textiles. Pretty foundational stuff. Right, heavy industry mostly. Exactly. But over the years, the list grew significantly as the economy diversified. They added things like coffee curing, biscuit making, motor road transport, even cinema theaters if they employed 5 or more people. Cinema theaters, interesting. Yeah. And more recently, you see additions like iron or pellet industries, IT and computer-related places, life insurance companies, though not the main life insurance corporation of India, that's separate. Also private airports, joint venture airports, electronic media in the private sector, and even lodging houses. So it's really expanded from manufacturing into services and tech. Definitely. You can see that trend quite clearly. Okay, so if a business is in one of those sectors, who inside that business becomes an EPF member? Is it everyone? Generally speaking, it's pretty broad. Any person who's employed for wages, doing any kind of work, whether it's directly for the establishment or sort of connected to its work, is usually eligible. Any exceptions jump out? Well, apprentices are sometimes excluded, depending on the specific context defined in the rules. And another important group since October 1st, 2008 is international workers. They also come under the EPF umbrella, but subject to certain conditions. International workers. That adds another layer. Anything specific about them we should know? There is this concept of excluded employees among international workers. Our sources mention it, but don't really detail the exact criteria for who gets excluded. But the main point is, yes, international workers can be EPF members under specific circumstances. Okay. And when someone new joins a company that's covered by EPF, what's the process? What does the employer have to do? The employer has a key role right at the start. They're required by law to get certain details from the new hire. They use a specific form for this, Form 2. It's basically an employee declaration. Form 2, got it. And that information from Form 2 then needs to be sent off to the commissioner. That's what gets the ball rolling for setting up their EPF account. Okay, so the company's covered, the new person is signed up via Form 2. Let's talk money. The contributions, how does that side of it work? Right, the financial engine. The basic setup is fairly straightforward on the face of it. The employee contributes 12% of their basic pay plus any dearness allowance. Dearness allowance being like a cost of living adjustment. Exactly. So 12% from the employee. And then the employer has to put in a matching amount, another 12%. But this is important. The employer's share gets split. Split? How? Okay, so of the employer's 12%, a chunk 8.33% goes into something called the Employee's Pension Scheme, or EPS. Ah, the pension part. Right. And the remaining 3.67% from the employer goes into the actual EPF account alongside the employee's 12%. So it's kind of contributing to two pots simultaneously, the Provident Fund and the pension scheme. Interesting. So dual benefit. Now, these contributions build up over time. What about interest? How does that work? Good question. The interest on the EPF balance is actually calculated every month, but it only gets credited to the member's account once a year, annually. Calculated monthly, credited annually. And who decides the rate? The government announces the interest rate for each financial year. Just as an example, for the year 2021-2022, the rate declared was 8.10%. 8.10%. And the sources we looked at even give a breakdown showing how that monthly interest calculation works, based on the basic pay and dearness allowance. It ensures the savings pot grows steadily while someone's employed. That compounding must really add up over a career. Has anything changed recently about how interest is paid out, especially maybe when someone makes a claim or withdraws money? Yes, actually, there's a fairly recent update on that. It kicked in for claims settled after November 30th, 2024. Okay, what changed? Before this change, the rules around interest payment when a claim was settled were a bit more tied to when the claim was received. Now, it's simpler and arguably better for the employee.
Interest is payable right up to the end of the month before the date the final payment is authorized. Regardless of when they put the claim in. Exactly. Doesn't matter when the claim landed. It's an amendment to paragraph 60 of the EPF scheme. Seems designed to give a more consistent interest accrual right up to the point of payout. That sounds like a positive simplification. Now, what about higher earners? If someone's salary is, say, way above the average, does that 12% contribution apply to their entire pay packet? No, there's a ceiling on that. The contributions, both employee and employer shares, are calculated based on a specific wage ceiling. According to our sources, that ceiling is currently 15,000 per month. 15,000 rupees. Right. So if an employee earns more than 15,000 a month, the contributions, the 12% from them, and the employer's 12% split between EPS and EPF are only calculated on that first 15,000. Anything they earn above that isn't subject to EPF contributions under the standard rules. Okay, so there's a defined cap. Makes sense. Let's shift gears a bit to the employer side again. What are their main ongoing duties to stay compliant? Compliance is a big responsibility for employers, definitely. Their core duties are, 1, making sure they deduct and remit those monthly contributions for all eligible employees on time, and 2, filing the necessary returns with the EPFO, the Employees Provident Fund Organization. And the deadline for that? The returns need to be filed on or before the 25th of every month. And the way to do it now is increasingly online, through the EPFO's unified portal. That's the preferred method. What's actually involved in filing that return? Is it just clicking a button? If only. I know it's a bit more involved. It typically includes things like preparing the detailed salary or wages register first, then verifying the challan, that's the payment form, ensuring it's accurate, then generating that challan online and submitting it, and finally, actually filing the EPF return data itself. So several steps needing careful attention. Absolutely. Accuracy and timeliness are key. Meticulous record keeping is essential. Is there any special reporting needed right when a company first comes under the EPF rules? Yes, there is. Within 15 days of the EPF scheme becoming applicable to them, the employer has to send in a consolidated return. Consolidated return. Yeah, basically a summary. It has to be in a specific format prescribed by the commissioner, and it needs to detail things like the basic wage, dearness allowance, and any retaining allowance paid to every employee who is required or eligible to join the fund. It gives the EPFO a baseline snapshot. Seems like tight deadlines and processes. Yeah. What happens if an employer slips up? If they miss deadlines or delay payments? Well, the consequences can be quite serious. There are financial penalties involved. For delayed payments, there's interest charged, and the rate increases the longer the delay. How steep does it get? It starts at 5% per annum for delays up to 2 months, and then it jumps to 10% for 2 to 4 months, 15% for 4 to 6 months, and then a pretty hefty 25% per annum for delays over 6 months. 25%. Yeah. Though there's a cap, the total penalty interest can't exceed 100% of the actual amount that was due. But wait, there's more. How? On top of that penalty interest, there's also a simple interest charge of 12% per year, calculated for every single day the contribution payment is late. Wow, so it really adds up. They're serious about timely payments. They absolutely are. These penalties are designed to really push employers to comply on time and protect the employees' funds. Does the EPFO actively chase these overdue amounts? They do. They run annual special recovery drives, specifically targeting outstanding dues. And they even make efforts to recover dues that are tied up in court cases, what they call not immediately realizable dues, because a court might have put a temporary hold on recovery. They actively work with the courts to try and get those stays lifted. So they are persistent. Okay, let's switch focus back to the employee. We know the main goal is retirement savings, but can people access their EPF money before they retire? Are there partial withdrawals allowed? Yes, definitely. The scheme allows for partial withdrawals under several specific circumstances to help members meet significant life expenses. Like what, for instance? Well, the list includes things like funding children's education, covering costs for major medical treatment for themselves or family, repaying a home loan, meeting expenses for marriage, their own or dependents, buying land or buying a house or flat. That covers quite a few major life events. It does. There are also provisions for withdrawal if the establishment closes down or during a natural calamity. Also, interestingly, you can withdraw some funds if you're within 1 year of retirement or if you've been unemployed for more than a month. Unemployment for over a month. Oh, okay. Each of these usually has specific conditions attached, like how long you need to have been a member and limits on how much you can take out. Right. And what about getting the full amount out? What are the main triggers for that?
Full withdrawal is primarily linked to retirement. The standard age is after turning 55. 55, okay. But there are other situations too. If someone has to retire early because of a permanent and total incapacity for work, and this needs to be certified by a medical board, they can withdraw the full balance. So, serious medical reasons. Yes. And there's also a provision covering certain specific illnesses like TB, leprosy, or cancer. If someone contracts one of these, even after leaving their job but before the final payment is made, it can be deemed as incapacity, allowing for full withdrawal. That seems like an important protection. I think I also saw something about taking out a big chunk just before retirement. Yes, that's right. It's quite a useful feature for planning. Once a member turns 54, they become eligible to withdraw up to 90% of their total EPF balance. 90%. Yep, 90%. But it has to be within 1 year of their actual retirement date on superannuation. Gives people access to a significant sum as they transition out of work. Makes sense. Now, a more difficult scenario. What happens if a member passes away? Who gets the EPF money? That's where the nomination comes in, which goes back to that Form 2 we mentioned earlier. When joining, employees are required to nominate who should receive the EPF balance if they die. And who can they nominate? The rules generally prioritize family members. And there are specific rules around marriage. If you make a nomination and then get married, that old nomination automatically becomes invalid. You have to make a new one. Okay. Marriage voids previous nomination. Correct. Similarly, if you had no family when you made a nomination, but later acquire a family, like getting married or having children, that earlier nomination becomes invalid too, and you need to nominate your family members. Good to know those details. On a practical note, how easy is it for employees to just, check their balance or see what's happening with a claim they've made? The EPFO has made some real strides with digital services here. Employees can definitely check their claim status online through the official portal, and checking the PFEF account balance is also possible online. Any other ways? Yes, one method mentioned in our sources is quite handy using SMS. If you send a text message with your UAN, that's the universal account number, and a few other required details to a specific EPFO number, you can get your balance details sent back to your phone via SMS. Via SMS, it's pretty convenient. It is. Offers a quick and easy way to stay updated without needing internet access necessarily. Definitely useful. Okay, let's touch on something slightly different. Exempted establishments. What does that mean? Right, exempted establishments. Under Section 17 of the EPF Act, some companies can actually get an exemption from the main statutory EPF scheme. Why would they get an exemption? The main reason is if they already run their own private Provident fund scheme or trust for their employees, and if the authorities determine that the benefits offered by this private scheme are equal to or even better than the benefits under the official EPF scheme. So if their own system is just as good or better? Essentially, yes. The idea is to allow well-managed private funds to continue, avoiding duplication, provided they meet the standards. If a company gets this exemption, are they completely off the hook regarding the EPF Act? Not entirely, no. Even exempted establishments still have to follow certain key sections of the Act. Our sources specifically mention Section 6, 7A, 8, and 14B. And those cover? Let's see. Section 6 relates to contributions. Section A is about determining the money due. Section 8 covers how to recover that money, and 14B deals with penalties for delays. So the core financial disciplines and recovery mechanisms still apply. They manage their own fund, yes, but within the Act's broader framework. So they still have significant responsibilities. What else do these exempted employers need to do? They have a clear set of duties. They need to maintain proper, detailed accounts for their own PF trust. They have to submit regular returns to the EPFO. They need to allow EPFO officials to inspect their records and operations. They have to pay any applicable administrative or inspection charges. And crucially, they must invest the Provident Fund money they collect strictly according to the directions laid down by the central government. Investment rules, too. Makes sense, to protect the funds. Exactly. It's all about ensuring the safety and growth of those employee contributions, even in a private trust. What if they don't follow these rules? Yeah. Or if their scheme turns out not to be as good as promised, or it's mismanaged? Well, the EPFO has the power to cancel their exemption. If there's non-compliance, or if the terms of their trust aren't being properly followed by the Board of Trustees managing it, the exemption can be revoked. What's the process for that? Typically, the EPFO would issue a show cause notice first, giving the establishment a chance to respond and fix the issues. But if things aren't rectified, or the explanation isn't satisfactory, the exemption gets canceled.
And then, the establishment comes back under the main EPF scheme and has to follow all its standard rules. So there's ongoing oversight. Anything new on how these exemptions are being managed? Yes, actually quite recently. On November 29th, 2023, the EPFO rolled out a detailed standard operating procedure, an SOP specifically for managing and regulating these EPF exemptions. An SOP. What does it focus on? It sets out clear guidelines for the EPFO on how to oversee these exempted places. There's a strong focus on things like conducting regular, thorough compliance audits and properly evaluating the performance of these private PF trusts. The goal is clear: ensure employees in exempted companies are getting benefits that are genuinely no less favorable than the main EPF scheme. Okay, that's a comprehensive look at the operational side. Now let's shift to the legal interpretations. Our sources really emphasize the role of the courts, particularly the Supreme Court, in shaping how the EPF law is understood and applied. Absolutely. Landmark judgments from the Supreme Court have been critical. They've provided much-needed clarity on all sorts of tricky aspects: eligibility, what counts as wages, withdrawals, employer obligations, the list goes on. Let's walk through some key ones. The outline mentions Bridge and Roofco India, LTD versus Union of India. What was the big takeaway from that one? Right, Bridge and Roof, that's a classic from 1963. The core issue was defining basic wages for calculating PF contributions. The Supreme Court ruled that a typical production bonus, the kind paid on top of regular fixed wages, generally shouldn't be included in basic wages for PF purposes. So it clarified what counts towards that contribution base. Exactly. It had a big impact, especially in manufacturing sectors where those kinds of bonuses were common. Okay. Next up, Regional Provident Fund Commissioner versus Central Erica Nut and Cocoa Marketing and Processing Cooperative Limited. What was the issue there? That case from 2006 tackled the question of trainees. Were they employees under the Act? The High Court had said these specific trainees weren't. It highlights how crucial defining their employer-employee relationship is for EPF applicability. Right, the definition of employee. We also have several cases listed involving schools and colleges. What were the battles about there? Yes, the educational institutions. This has been a recurring point of contention. You have cases like MP Shikshat Congress, Mathosri Manik Bhai Kothari College, Noor Niwas Nursery Public School, SD College, all dealing with whether the EPF Act applied to them. What was the deciding factor usually? A lot of it boiled down to the degree of control the government had over these institutions. Was it enough control to bring them under the Act's definition of an establishment covered by government notification? For example, the MP Shikshat case looked at government-aided private schools. The courts had to apply existing legal tests for what constitutes control. Okay, so control was key. The outline also mentions functional integrality, linked back to that Central Erica Nut case, referencing others like Ellen Gadudi and Sons and Associated Cement Companies. What's that concept about? Functional integrality. Yeah. That's a test the courts use. It helps decide if two seemingly separate units or businesses should actually be treated as one single establishment for EPF purposes. Even if they're legally different companies. Potentially, yes. The key question, as laid out in cases like Gadodia and ACC, is, are these units operationally interdependent? Could one realistically function without the other? If they're deeply intertwined, functionally integrated, they're more likely to be clubbed together as one establishment under the Act. Interesting legal test. Let's move to organochemical industries and another versus Union of India. What did that clarify? Organochemical dealt with damages the penalties under Section 14B for late contributions. The Supreme Court made an important point here. They said, yes, employers who default have to pay damages, but these damages should primarily be compensatory. Compensatory meaning? Meaning they should aim to make good the loss suffered by the employees because of the delay, like covering the lost interest. While there's a deterrent element, the damages shouldn't be excessively punitive, going far beyond the actual harm caused. They should relate to the loss suffered by the beneficiaries. Got it. And what about when an employer faces financial trouble, like insolvency? Section 11.2 and the Maharashtra State Cooperative Bank case are mentioned. Right. Section 11.2 is a really powerful protection for employees. It essentially says that any unpaid EPF contributions owed by an employer get first priority over almost all other debts if the employer goes bankrupt or is wound up. First dibs for EPF dues. Pretty much. The Maharashtra State Cooperative Bank case strongly reinforced this.
The court called the EPF dues a first charge on the employer's assets, meaning they get paid out before most other creditors. It underscores how vital these retirement savings are considered. That's a significant protection. There's also the Employees Provident Fund organization versus Sunil Kumar B case. What was that about? Sunil Kumar B was a major one concerning the employees' pension scheme, the EPS. The Kerala High Court had actually struck down certain amendments made to the EPS rules back in 1995. The EPFO took the matter to the Supreme Court. And the outcome. The Supreme Court's final judgment in that case had really wide-ranging effects on the pension scheme, particularly around eligibility, calculation of pension, and contribution requirements. It's a complex area, but that case was pivotal for the EPS. Okay. And lastly, Regional Provident Fund Commissioner versus Dharam Singh Raghuvanshi. The note says it established something about the nature of the offense of non-payment. Yes, that's a crucial clarification for enforcement. The Supreme Court ruled in Dharam Singh that an employer's failure to pay their EPF contribution is a continuing offense. Continuing offense, meaning? It means the offense doesn't just happen on the day the payment was missed and then end. It continues for every day the payment remains outstanding. The big implication is for the statute of limitations, the time limit for taking legal action. Because it's a continuing offense, the clock doesn't start running just from the initial default date. So employers can't just wait it out and hope the deadline passes. Exactly. It gives the EPFO a much longer period to prosecute non-compliant employers and ensures they remain liable as long as the default continues. These court cases really do show how the law gets interpreted and applied in practice. It adds so much texture to understanding the rules. Absolutely. They act as vital signposts, clarifying rights and responsibilities for everyone involved in this really important Social Security system. Well, this has been a truly comprehensive deep dive. We've gone from the origins in 1951 right through to recent legal interpretations, drawing on all those different sources. To wrap things up, what are the main things you think our listeners should take away from this? I think the key things are, first, the EPF is absolutely fundamental to retirement savings in India, applying really broadly. Second, it's a joint effort both employees and employers contribute, and that money grows with interest, albeit credited annually. Third, employer compliance isn't optional. There are strict rules, deadlines, and significant penalties for getting it wrong. And for employees? For employees, remember there's flexibility. Partial withdrawals are possible for major needs before retirement. Full withdrawal happens at retirement, or potentially earlier due to incapacity. And don't forget things like nomination using Form 2 and the online tools to track your account. We also touched on those exempted establishments. They have their own rules, but are still overseen. And finally, the huge role the courts have played in defining how this whole system works. It really is a complex system, but essential. It's been fascinating to see how it started and just how much it's had to adapt, like with those 15 amendments you mentioned. It really has. And, it makes you think about the balance the whole framework tries to strike. It's constantly juggling employee security with the responsibilities placed on employers. That's a great point. And it leads to a bigger question, perhaps for our listeners to ponder. What does this complex, evolving EPF framework really tell us about the direction of Social Security in India? How is it shaping that future? Maybe exploring a specific part of the Act, or one of those court cases we discussed, might offer some personal insights depending on your own situation or interests. That's definitely something to think about. A great note to end on. Thank you so much for guiding us through this intricate landscape of the EPF today. My pleasure. It was good to delve into it. And thank you for joining us on the deep dive. Until next time, keep digging deeper.